Assalamu alaikum students, Mrs. Talat Khushnood here. Our today's topic is persuasive writing. Students, इससे पहले हम essay writing के बारे में पढ़ चुके हैं. Essay writing is a short literary composition. If you remember, we talked about it in detail, its various parts, its structure of the essay, which includes unity, coherence, and balance, etc. And then its three major parts: beginning of the essay, middle of the essay, and the end of the essay, and then the tone of the essay. When we are talking about the persuasive writing, mainly we means the writing persuasive essay. And as you know, there are some steps in writing essay which are very much important: selection of the subject, definition of the subject, limit to the subject, and then collection of material, making an outline, writing rough draft, revision and writing of a second draft, writing final draft. So these are some steps in essay writing. And then I think that we talked about the types of essays as well. There are many types of essays or essay writing, in which some are included in your syllabus, and persuasive writing is one. First of all, keep in your mind that persuasive writing is a part of argumentation. Argumentation या argumentative essay वो ऐसे होता है जिसमें आप अपना एक नुक्ता नज़र या अपनी एक राय देते हैं और फिर अपनी उस राय को डिफेंड करते हैं, which is against the arguments otherwise. It means that these are some sort of topics which are having the capacity to go otherwise as well. मीन्स के आप इसके दोनों साइड्स पे जा सकते हैं. हर चीज़ के जैसे दो पहलू होते हैं, उसकी दोनों तरफ आप उसके आर्ग्यूमेंट्स फॉर में भी और अगेंस्ट में भी दिए जा सकते हैं. परसुएसिव ऐसे भी योर द परसुएसिव राइटिंग जो है वो भी तकरीबन इसी का एक पार्ट है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय परसुएशन. Persuasion is a word that is taken from to persuade, means to make someone's opinion in your favor, or draw someone's opinion in your favor, or in the favor of your point of view, or to convince someone. कि किसी को कन्विंस करना, अपने नुक्ता नज़र के साथ किसी को हम ख्याल करना. और how is that possible? Obviously, in that connection you make many arguments, you give many examples. There are some different techniques which are used to persuade others to your point of view. Main aim of the persuasive essay is to show that your argument is true. It attempts to convince the reader that your point of view is more legitimate than others. More legitimate than others. आप अपने रीडर को इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करें कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है या जो आपका नुक्ता नज़र या पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, वो ज़्यादा मीनिंगफुल है देन द पॉइंट ऑफ व्यूज़ विच आर being narrated or which are being given by the others in that thesis or in that point of view, in that matter. Once you have developed your argument, you should back it up with available evidence and examples. बैकअप करने का मतलब ये होता है कि अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करना, उसको हेल्प करना. When you for many students, the planning of an persuasive essay is not an easy matter. The following steps will facilitate the process. Students देखते हैं कि वो कौन कौन सी
टेक्निक्स हैं या वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके हम एक अच्छी परसुएशन जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं या एक अच्छी परसुएसिव राइटिंग जो है वो लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफाइन योर एटीट्यूड ऑन द मैटर। इट मीन्स दैट इट शुड बी क्लियर दैट व्हाट इज़ योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ये बात थोड़ी सी अजीब तो लगती है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ऑब्वियसली sometimes we start giving our arguments to the matter on which we are not clear ourselves। हम कुछ ऐसे मौज़ूआत पे भी ऐसे ही लिखना या बोलना शुरू कर देते हैं जिनके बारे में हमारी नॉलेज कंप्लीट नहीं होती। So that is a very dangerous thing when you are writing a persuasive essay or persuasive article. You should be definitely or definite clear in your point of view, and then you should express clearly and convincingly why you have chosen this position on the subject of your research। फिर आप अपने रीडर को कन्विंस करेंगे क्लियर मैनर में, ये एक्सप्रेस करके, ये बताकर कि आपने ये पोजीशन क्यों चुनी। मींस के आप इसकी किसी भी मैटर की जो भी आर्ग्यूमेंट या जो भी साइड आपने चुनी है, आप उसकी फॉर में जा रहे हैं या आप उसकी अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ study your prospective audience। That is very much important whenever you are writing something or whenever you are speaking to some audience। In both these matters, your audience analysis is very much important। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस की समझ बूझ कितनी है। Try to find out whether your audience will agree with the argument, whether it accepts or disapproves of your position, and then examine closely the subject। Next step is examine closely the subject। All arguments in persuasive essay should be backed up with reliable and trustworthy evidence। Evidence is very important। आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने के लिए और उसको साबित करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंसेस की ज़रूरत है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी मीनिंगफुल होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्लान योर एसे। ट्राई टू डिज़ाइन योर एसे बाय फिगरिंग आउट द ऑर्डर in which you will present your evidence। In essay writing, order is very much important। आप किस तरह से किस ऑर्डर में चलते हैं, आप किस ऑर्डर में लिखना शुरू करते हैं। आप कॉमन चीज़ से बात को स्टार्ट करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ जाते हैं। तो देर आर सम ऑर्डर्स दैट आर फॉलोड बाय द राइटर्स व्हेन दे आर डूइंग समथिंग इन एसे राइटिंग। तो ये जो है सबसे पहले इस डिज़ाइनिंग में मींस कि अपनी प्लान करने में, अपने एसे की आउटलाइनिंग में आपके लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको फिगर आउट करें, अपने उस ऑर्डर को फिगर आउट करें जिस ऑर्डर पे चलना है आपने, जिस ऑर्डर के ऊपर आपने अपने परसुएशन को आगे लेकर चलना है या स्ट्रॉन्ग बनाना है। टू राइट अ साउंड परसुएसिव एसे, डू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द सब्जेक्ट you research। You should research thoroughly the topic and provide reliable, legitimate resources to back it up। Again, the same thing, you must be very clear about your point of view। You must have a lot of evidences about it and examples that you will give in your essay to make sure that you are right, that you are stronger than your opponents। Re-examine your thesis, that is the next step। अपने थीसिस को, अपनी राइटिंग को, आपने जो कुछ भी लिखा हो उसको re-examine कीजिए। Your thesis is like a coin and
इट शुड हैव टू साइड्स, जैसे कॉइन की दो साइड्स होती हैं ना, इसी तरह इसकी भी दो साइड्स होनी चाहिए या होती हैं। इट शुड बी आर्ग्यूएबल, इट मीन्स कि ये पॉइंट या ये टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि जिसके लोग फेवर में भी जा रहे हों और जिसके अगेंस्ट में भी जा सकते हों, मीन्स के दोनों तरफ के पॉइंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हों। तो then you can make your argument or make your persuasion. In order to make it arguable, provide counter thesis to your argument. जब तक आप अपोजिशन या अपोजिंग आइडियाज़ को डिस्कस नहीं करोगे, आप अपने आइडियाज़ को क्लियर करने की पोजीशन में नहीं आ सकते। तो दैट इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू काउंटर थीसिस मीन्स अदरवाइज मीन्स के अपोजिट थीसिस को भी आप उसमें मेंशन करेंगे, तभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा क्लियर करके दूसरों को परसुएड कर सकेंगे। अंडरस्टैंड another point of view. In order to make the best of your presentation, find out why other people hold a different point of view. Try to understand that कि जो दूसरे लोग हैं, जो आपकी दूसरी तरफ पे अपोजिट साइड पे लोग हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश कीजिए। एग्जामिन द वीक पॉइंट्स ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स, ये दो तरह से आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि एक तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस तरह से, और दूसरा आप उनके पॉइंट्स को जब समझेंगे ना तो उनके वीक पॉइंट्स आपके हाथ में आएंगे, जो आपके लिए ज़्यादा पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स और ज़्यादा पावरफुल परसुएसिव पॉइंट्स जो हैं उनको ढूंढने में मदद करेंगे। ऑन दिस स्टेज इट शुड you should closely examine the weakness of your points as well, और इसके साथ साथ आपको अपने पॉइंट्स की वीकनेस जो है वो भी एग्जामिन करने का मौका मिलेगा। बैकअप योर आर्ग्यूमेंट्स व्हेन यू हैव सेड समथिंग, देन स्ट्रांगली स्टैंड देयर। जब आप अपना एक आर्ग्यूमेंट बना लेते हैं या अपना एक पॉइंट बना लेते हैं तो फिर उसको स्ट्रांगली फॉलो करें, उसको बैकअप करें। ऑल योर एविडेंस शुड बी रीज़नेबल एंड रिलायबल। जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो रीज़नेबल होना चाहिए, मीन्स के दैट शुड बी लॉजिकल एंड ट्रस्टवर्दी। यू माइट इंक्लूड सम स्टैटिस्टिक्स एज वेल। अगर उसमें आपको कुछ अदादोशुमार, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है अदादोशुमार, ये कोई ऐसे फिगर्स देने पड़ें तो उनको भी उसमें शामिल कीजिए, बट बाय डूइंग सो you should be sure about it that these statistics are correct. In this case, do not forget that you must cite the sources. Whenever you're writing a persuasive writing, then you can also mention, you can also give the sites कि आप जहाँ से हवाला दे रहे हैं उन sources का, उन books का, उन हो सकता है कि there are some leaders or there are some philosophers, जहाँ कहीं से भी आप उसको रेफ़र कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, आप उसकी साइटेशन भी उसमें दे सकते हैं, उसका हवाला और उसके सोर्सेज को मेंशन कर सकते हैं। Provide some quotes. Sometimes it is indispensable to provide some quotes from the reliable and reputable experts. Quotations जो आपकी फेवर में जा रही हों, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर रही हों, उन कोटेशंस को करेक्ट वे में, करेक्ट वर्ड्स में, करेक्ट पर्सनैलिटी जो कि जिनकी वो कोटेशंस हों उनके नाम के साथ ऐड कीजिए। अदरवाइज़ इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट देन लीव इट। इंक्लूड एग्जाम्पल्स, दे एनहेंस द रीडर्स क्रेडिबिलिटी। व्हेन reader is not understanding your point, you can give examples to make them understand or to make your point more clear to them. So these are some steps which are helpful in writing a persuasive writing or persuasive essay.
to make you more clear, let's have a look on some topics that in which you can give persuasion, or you can apply these rules. So that's all for today. Allah Hafiz.